problem that we are trying to solve with creativity and innovation. Hello and welcome to all. Today, Axis Institute of Planning and Management has organized an insightful session for management students on divergent thinking, creativity, and innovation. Well, it's time that we all get all of you introduced to the guest speaker. Everyone, please put your hands together for, as you can see him on the live screen, Mr. Vishal Goyal. Mr. Vishal Goyal is a psychologist by education and trainer by profession. He has helped various corporates by various corporates by various training programs. The programs were aimed at building teams, improving communication among employees, establishing functional conflict resolution strategies, enhancing leadership potentials, and developing better management training. He has conducted training programs for various corporates like P&G, Amazon Distributors, Bajaj, HSBC Bank, HCL Technologies, GSW Steels, and establishing training and wellness programs for their employees. Now, I would like to request our guest speaker to enlighten us with his valuable learning. Over to you, sir. Good morning, everyone. Thank you, Tripti, and everyone for the kind introduction. I hope I'm audible to all of you clearly and you are able to see me also without any significant trouble. So I see that we are 100 people here, around 100 people. It would be great. I think it is imperative that you guys can switch on your video if it's possible, and the if your seniors and teachers seem it right, you can switch on your videos also if you're connected through devices. Ketki ji, please say if that is possible and if we can do that. Okay. Why is it important to switch on your videos? Because otherwise you're not here in the session for me. Another reason is that it would be great to see you guys, or it would be a one-way communication. Chaliye. So you guys know why are we sitting here today, right? Either you are sitting here or you have been made to sit here. So what's the reason for that? Would anyone like to share? Why are you guys here today? We are going to talk and do a few activities today. But what's the point of doing it all? That's the bigger question. Okay. You have a couple of options to talk to me, first of all, because otherwise it would be boring for all of you and for me also. Let me be very honest with you guys. Okay. You can chat with me, as Ketki is saying. You can text it, or your devices have digital reactions, virtual reactions as well. Something like this or this. So you can use those reactions to respond to my questions and to what I'm saying also. It would be better. Otherwise, we would all be feeling less energy. Now let me, because I think, or I feel that we might be in a little bit of, less energy state. It happens when there are so many people. There are more than 100 people here. So it happens. Let me put you in some urgency why this is important to you, because you're not sharing. Let me put it very clearly to you that this is very important to you. As given in my introduction, I've worked with a lot of organizations related to various training programs. And the basic gist of that is
I have uh, so what I do when I go there is simply there are people like you there who are working. It's you people, not any other people. कहीं और से नहीं कूद कर आए हैं, वो पैदा नहीं हुए कहीं और से, आप ही लोग हैं. You are management students right now, and in a couple of years or in a couple of months you will be there, and you will face those challenges which those corporate people, corporate teams feel right now. I'm sure most of you are planning on this pathway only. You will be working somewhere in some time. You might be aware of some challenges that can come, and you might not be aware of the challenges because right now you're not thinking that I will face this. You are in a comfortable zone right now. You are in your academics right now, but this is the reality. You're going to do work in some time, and you're going to face those challenges which the corporate teams and people face as of now. So it's a good chance for you to understand what are some of the challenges that we face there while we are working, and how we try to build our capacity to deal with them. That's the gist of it. Okay, so there are a lot of people in corporate teams also. They are not all effectively. Uh, they are not all effective. They are not all the same. They have different capabilities. Some goes higher in the hierarchy. Some become leaders. Some don't. Now you need to ask yourself whether are you whether do you understand what are the things that you will need to build in yourself for a successful career. Are you prioritizing that? Is that important to you or not? Or there can be another thing that you would keep blaming the situation, the environment, your education, your system, and etc., 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 for whatever success you achieve. So this is very imperative and very urgent for you. This is not something that is going to take years or next lifetime. This is going to happen right now in a couple of months. So if you have not been thinking about it, you should start thinking about it. And I think it's a great space that you have received today or in the similar kind of sessions or programs that you receive. And one thing, one reaction that would signify if you consider it is important or not is that you will switch on your video. You won't understand it right now, but if you can, and if you switch on your video, that means you are dedicating yourself to this session. That's the thing. You are able to take the risk. You are able to show your face. You are able to present here, and you are sincere to move towards this thing. Before we start, it's very important. I have to put this in context for you guys because right now I can see some of you. And the thing that I feel is that you're not serious as of now, and it's cool. It's understandable because it's not your fault. It's just the environment that we are in. Because you are currently in academics, you're not that serious about it. But let's do one thing. Okay, let's do one thing. Okay, and I understand that you're kind of adults. You're adults and sensible people, so take care of your mics. Make sure that your mic is off until you want to say something. Otherwise, it would create a ruckus. So let's do one thing. We're going to do a small activity here. Okay, are you guys with me?
Can we do this? Can we do this? Either you can write it to me or you can react. You can give me a virtual reaction. You can give me a thumbs up. Do you want to do a small activity or not? Just give me a thumbs up. I'll understand that you want to do it. If you don't want to do it, then it's another case. Perfect. Perfect. All right. So because I won't be able to hear you, so we will do something that I can see. Okay. So I'm going to say an odd number and you would clap when I say an odd number. जितना तेज आपको क्लैप करना आप कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है. And when I say a color, the name of a color, you're going to say your name loud. You know your name, right? Can I expect you to say your name? You know that much? Okay. All right. Are we ready? Can we do this? चलिए. All right. ठीक है. मुझे आप लोगों के reactions मिल रहे हैं अब. All right. So we'll start. I'll say an odd number. You clap. I'll say the name of a color. You say your name aloud. Okay. अपना नाम जितनी तेज बोल सकते हो उतनी तेज बोलो. 7. Yellow. I can see you guys. Don't worry about it. I can see you. 10. Red. 11. Green. Okay, we are going to do one more thing in this. We are going to add now odd number and even number. So when I say an odd number, you clap. But when I say an even number, either you can smile or you can make a dab. You know how to dab? Like this. Yes, great. So either you can dab on even number, you can say your name on the name of a color, and you can clap when I say an odd number. Is that clear? ठीक है. Actually मुझे नहीं पता चल रहा तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, but कर लो. जो थोड़ा सा हेसिटेट भी कर रहे हैं, कब तक हेसिटेट करोगे? और प्रोफेसर यूज्ड टू से भाई कभी तो बीच बाजार उतरोगे, कभी तो मार्केट में आओगे, कब तक हेसिटेट करोगे? चलो. So I'll say an odd number. 7. You clap. बहुत बेसिक सी चीज है. You can clap. I'll say a color. Red. You say your name loud. I should see your lips moving. Yes. अभी किस कुछ लोगों ने किया है. I'll say an even number. Either make you dab or you smile, whichever you prefer. I'll always prefer a dab. So I'll say an even number, for example, 4 or 8, and I should see you smiling or dabbing. Smile करेंगे क्यों? It's a more comfortable thing to do. Okay. Are you done or you want to do more?
and we are done. Chalo. I'll make you understand why this thing is important for us to do in some time, but it might, you guys are interacting with me for the first time. It's natural that you might be hesitated a bit. Mm, and it might take some time for you to get comfortable with me. Tell you. So the way we do things, the way I do things is not to preach or teach because it's not going to make a much of a difference if I just say things to you. The way we do things is to try something, to experiment something, and to learn from it. So first thing we are going to do is we are going to do an activity that you can do individually. You don't have to do it with me. You can do it individually. So, all right, let me share it with you guys. You need to be present here with me. Okay. Okay. We are not going to take a lot of your time, but if you're present here, try to be active and try to learn something from here. All right. You can see this. Okay. You must have a notebook and a pen with you. Let me take care of this. You can see this clearly. If there is any problem seeing this, let me know. जो ये ड्राइंग कर रहे हैं ड्राइंग मत करो. चलो, इसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है इस चीज में? Are you able to point any difference? अरे वाह. Let me take care of this first because you know when we are students we do these kind of things. Chaliye, in any case, let me describe it to you and we'll take care of that later on. So here is a hand with two thumbs and six fingers in total. Usually we have one thumb. Okay? पहले आप देख लो, थोड़ा सा इसे प्रोसेस कर लो कि आपको ये क्यों दिखाया जा रहा है. Now imagine, so the research says that the kind of evolution that's going to happen next, we might have two thumbs. Why? Because of the phone kind of phone usage that we are doing. So many phones that we are using, right? Um, all right, now what you have to do is imagine that you have two thumbs. You have this kind of hand. What kind of benefits would it do for you and what kind of cons और demerits it can have for you. मतलब कि भाई अगर तुम्हारे दो thumbs हो जाए, दो अंगूठे हो जाए एक अंगूठे की जगह, तो उससे फायदा होगा कि लॉस होगा. ये देखिए.
I'm going to give you 5 minutes. You can take your time and you need to write it down in your notebook. मैं आप लोगों की नोटबुक में आगे देख नहीं सकता, बट आपके जो आसपास हैं टीचर्स आपके, वो देख सकते हैं. So try to think of it. Now don't discuss for the next 30 minutes. Imagine that you are sitting individually, because let me know, let me give you a reality check कि भाई आप लोग यहाँ पे भी अकेले हैं, लाइफ में भी अकेले होंगे, और जब आप जॉब करने जाएंगे तब भी अकेले ही होंगे. आपके लेफ्ट वाला, आगे पीछे वाला कोई आपके साथ नहीं है, नहीं होगा. आपको फील होता होगा ये शायद कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारे साथ तो रहेंगे लोग, नहीं रहते हैं. ये फैक्ट है, हम आप लोगों के फेस से गुजर चुके हैं और बता रहे हैं. हमें भी ऐसा ही लगता था, तो हम भी ऐसे ही रहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है. तो आप नेक्स्ट 30 मिनट्स अपना इंडिविजुअली करें, अपना नोटबुक में जो आपको कहा गया है उसको करें, एंड लेटर ऑन आई विल हेल्प यू प्रोसेस कि इस चीज को कैसे, इसके बारे में सोचना है, इसे कैसे देखना है और इससे कैसे सीखना है. यू स्टार्ट डूइंग इट. यू हैव 4-5 minutes. Now I'll keep guiding you. Don't look into each other. Just focus on your thinking process. How much pros, how much cons you are able to write, how much benefits, how much demerits you are able to write of this thing of having two thumbs. It's a very interesting activity that we do, and we get a lot of weird responses, funny responses also. और हमें इस एक्टिविटी को करते हुए काफी मजा भी आता है और इससे काफी सीखने को मिलता है. इफ यू डू इट देन यू विल गेट टू लर्न फ्रॉम इट. अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग जो है वो लिमिटेड ही रहेगी. मैं लेक्चर देके चला जाऊंगा, काफी चीजें आपको बता के चला जाऊंगा, बट उसका कोई फायदा नहीं होना अनटिल एंड अनलेस आपने कुछ किया हो, आपने कुछ एफर्ट लगाया हो. राइट? कैन वी डू दिस? आर यू गाइज डूइंग इट? तो कुछ लोग चैट में भी लिख रहे हैं. अभी आप चैट में मत लिखो, अभी आप अपनी नोटबुक में लिखो, और इसका कोई लिमिट नहीं है सोचने का. आपको लग रहा होगा कि मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकती हूँ या नहीं. whatever comes to your mind, write it down, and I'll share with you कि कितने वियर्ड और फनी रिस्पॉन्सेस आते हैं इस चीज के. अपनी सोच को डेली लिमिट कर दो, कोई लिमिट ना हो उसकी. आपको वियर्ड लग रहा हो, आपको लग सकता है कि बाकी लोगों को भी वियर्ड लगे, कोई बात नहीं, वो आपको नहीं सोचना है. जस्ट वट एवर apart from that, think out of the box. कोई बात नहीं, जिसके पास नोटबुक्स नहीं है वो या तो अपने साथ वाले आसपास से देख लो पेजेस वगैरह, या अपने आप चैट में लिख लो, फोन में मैसेज कर लो, या फोन में जो आपका नोट पैड होता है उसमें लिख लो. सॉल्यूशन निकालो यार. हाँ, बस अपने डेस्क पे मत लिखने लग जाना, कहीं पेन लिया और डेस्क पे लिखने लग गए, सारी प्रॉपर्टी खराब कर दो. चलिए. Are we done or do you need more time?
Are we done? You can give me a thumbs up if you are done. If you need more time, you can write it on chat. Okay, we don't have much time. So now you can start sharing whatever you have written on the chat. Okay, so I have one response. I'll not take out the names क्योंकि आप लोगों की आदत है कि आप हंसने लग जाते हैं हर बात पे, है ना? So we have a response which says better grip हो गया अगर 2 thumbs होंगे तो, हैंड एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और हैंड एरिया इंक्रीज होगा तो उससे बहुत फायदे हो सकते हैं। जैसे किसी को स्लैप करना हो तो ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा इम्पैक्ट से स्लैप होगा। ग्रैबिंग कैपेसिटी वुड इंक्रीज, बिल्कुल। हारमोनियम प्ले करने में, गिटार प्ले करने में आसानी हो सकती है। हाँ, वन मोर, बस बहुत स्लैप कर लिया भाई। रन और जंप करने में आसानी हो सकती है क्योंकि ज्यादा थ्रस्ट मिल सकता है उससे, या एम करने में भी ज्यादा अच्छी ग्रिप बन सकती है। राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है वो देखना होगा आपको, कि स्पीड बढ़ा सकता है कि ग्रिप से क्या फायदा होगा, ज्यादा सुंदर लिखा जाएगा क्या। मल्टीपल थिंग्स होल्ड कर सकते हैं हम, यूनिक फील आएगी, आ सकती है अगर आप पहले हो जिसके 2 थम्स हो जाए, बट इवोल्यूशन तो सब में ये चेंज ला देगा तो फिर कॉमन हो जाएगा। यू कैन कैच एनीथिंग इजिली, बिल्कुल। बॉलिंग वॉलिंग ठीक है। और बताइए, और जल्दी जल्दी लिखिए, लिखते जाइए जो आपको लग रहा है कि भाई जितना वियर्ड तुम लिख सकते हो लिखो, बट डिसेंट मत लिखना, ठीक है? तुम्हें पता है कि डिसेंसी की लिमिट्स क्या होती है, उसे क्रॉस मत करना। उसके अलावा जो भी आप लिख सकते हैं, जितना भी आपको स्ट्रेंज या ऑड लगे कोई बात नहीं, लिख लो आप। फिर मैं बताऊंगा कि कितने स्ट्रेंज स्ट्रेंज चीजें मेरे को सुनने में आई हैं जब मैंने ये बाकी कॉलेजेस में और कंपनीज में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। तो शू लेसेस टाई करने में हेल्प होगी, कंप्यूटर कीबोर्ड चलाने में ज्यादा स्पीड हो जाएगी, टाइपिंग स्पीड विल इंक्रीज, यस यस। दोनों थम्स से लिखना सीख सकते हैं, अगेन स्पीड बढ़ सकती है, या फिर 2 थम्स होंगे तो शायद आप एक ही हाथ से 2 पेंसिल या 2 पेन पकड़ पाओ, और पता नहीं इससे क्या हो सकता है। ठीक है, एक व्यू पॉइंट ये आया है कि भाई ग्रिप जो है डिक्रीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि इंक्रीज हो। कार्ड्स खेलने में आसानी हो सकती है, किसी को पेंटिंग करनी हो तो आपके पास 4 अंगूठे हैं, 4 अंगूठों की ग्रिप आपको हेल्प कर सकती है। जगलिंग में आपको आसानी हो सकती है, जगल अगर आप कर रहे हैं तो, क्योंकि ग्रिप में हेल्प मिलेगी। एक थंब ही तो होता है हमारा जो ग्रिप करने में हेल्प करता है, इस तरीके से। फ्लूट पियानो प्ले करने में आसानी होगी। चलो जल्दी जल्दी लिख दो, काफी सारे आप लोगों ने शेयर करे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे लग रहा है कि एनर्जी है तुम लोगों में, और तुम लोग सोच रहे हो, तुम कर रहे हो जो मैं आपसे आपको जिस प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। यू गाइस आर डूइंग इट। ठीक है, बहुत बढ़िया। डिफिकल्टी इन डूइंग डेलिकेट वर्क, ओके, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा जो है वो बीच में टांग ना अड़ा दे ना, कहीं काम कर रहे हो और बीच में टांग अड़ा दे, ऐसा हो सकता है। वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमारे एक अंगूठा होता है, 2 अंगूठे हो जाएंगे तो अजीब सा लगेगा। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है, प्रोज एंड कॉन्स? आई एम श्योर कि जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये लगा होगा कि यार कितने ही प्रोज और कितने ही कॉन्स में लिख सकता हूँ, है ना? लिमिटेड लगा होगा आपको।
कि 4-5 लिख तो लिए, बस इससे ज्यादा तो अब सोचा ही नहीं जा रहा, इतना ही तो होगा, बस ग्रिप बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, और क्या कर सकते हैं। बट व्हेन यू लिसन टू अदर्स ओपिनियंस एंड आइडियाज, तो आपको दिखता है कि यार पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती हैं, कुछ सिमिलर होंगी, कुछ डिफरेंट होंगी, बट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और भी। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग शेयर करता हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो रहा। तो एक, आई वाज डूइंग दिस ट्रेनिंग इन अ कंपनी, एंड दीज वर मैनेजरियल लेवल पीपल। आप लोग भी मैनेजर बनना चाहेंगे ना आगे जाके, तो आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस स्टोरी काम आएगी। एंड ही वाज, ही वाज अप्रिशिएटेड, ही वाज अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, तो थोड़ा सा चौड़ वाला इंसान था वो अपनी कंपनी में। ही वाज अ वेरी गुड लेवल, अच्छी सैलरी भी थी भाई, बढ़िया। तो अब जब मैं उसके साथ ये एक्टिविटी कर रहा था, तो उन्होंने, जब सब खत्म हो रहा था तो हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके बाद वो आपस में जो साथ में बैठा था ना, उससे कुछ कुछ कर रहे थे। अब मेरी आदत है, मैं सुन लेता हूँ बात, क्योंकि ऑब्जर्व करने की आदत है, इस प्रोफेशन में है, ऐसे प्रोफेशन में है कि ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो उसकी बात सुनी तो मुझे समझ में आया वो क्या कह रहा था, उसने बताया तो नहीं, बट मैंने उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कराया कि कोई बात नहीं, शेयर कर लो, आई नो कि थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि मैं क्या बोल दूं। तो उन्होंने शेयर करा, उन्होंने शेयर क्या करा, कहते देखो अगर दो अंगूठे हैं तो क्या होता है, अभी जो नोट की गड्डी में नोट गिनने होते हैं ना, तो कैसे तो उसके लिए थंब से ऐसे करके और ऐसे ऐसे गिनना पड़ता है। तो अगर दो थंब होंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप दोनों से ऐसे करके और ऐसे ऐसे फटाफट नोट गिन सकते हैं, जल्दी जल्दी गड्डी गड्डी गिन सकते हैं। और एक एक और ट्रेनिंग सेशन था, उसमें हम लोग यही एक्टिविटी कर रहे थे। और उसमें भी एक सीनियर पोस्ट पे थी। तो उनसे जब मैंने काफी फोर्स करके पूछा कि कोई बात नहीं, बता दो, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ किसी को अजीब नहीं लगेगा, तो उन्होंने शेयर करा, देखो अभी अगर बच्चों के दो अंगूठे हो जाए तो क्या होगा। बच्चे अभी एक अंगूठा लिख करते हैं, अगर दो अंगूठे हो जाए तो उनका दो अंगूठे होंगे लिख करने के लिए। उनके लिए तो एंजॉय वाली बात हो गई। सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी डू। डेफिनेटली थोड़ी सी, हाँ जी, अभी भी आपके आइडियाज आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आइडियाज को, और जरूर मैं आगे शेयर करूंगा आप सभी के साथ अगर टाइम मिलेगा तो। बट अभी के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब इससे। यू हैव डन दिस एक्टिविटी, थोड़ा सा हम, थोड़ा सा भी आपने इसको एक पर्टिकुलर वे में करा है, अभी मैं आपसे जूम की तरह कनेक्टेड हूँ। अगर हम इसे फिजिकली होते तो हम इसे और एक तरीके से करते, इस एक्टिविटी को और रिगर और एंगेजमेंट के साथ करते। बट जो हमारा आज का एजेंडा है, आई थिंक आप लोगों ने उसके लिए काफी सही तरीके से इसको ट्राई किया है, एंड इट विल फुलफिल दैट। चलिए, तो नेक्स्ट चीज आती है कि भाई आप लोग सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है, इसको कर क्यों रहे हैं हम। उससे पहले आप लोगों की कुछ ऑब्जर्वेशंस रही होंगी वाइल डूइंग दिस, आप लोगों के कुछ अपने इनर चैलेंजेस रहे होंगे वाइल डूइंग दिस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो शेयरिंग में आए, वो डिस्कशन में आए। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। मैं आप सभी को अपना माइक ऑन करने की परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं अनशेयर कर रहा हूँ। मैं आपको अपना माइक ऑन करने की परमिशन दे रहा हूँ, और आप में से जो भी शेयर करना चाहे कि आपकी क्या लर्निंग थी, क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस करे, प्लीज डू इट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेयर यू लर्न। अदरवाइज अभी कर लो यार, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी यहाँ पे आपको कोई डांटेगा नहीं, आपको कुछ कहेगा नहीं। दिस इज टाइम एंड स्पेस फॉर यू गाइस। आई ओनली ट्राई टू हेल्प यू आउट। बट अगर आप जब काम करेंगे, जब कॉर्पोरेट में होंगे, जब जॉब में होंगे, तब वहां कोई इतना सपोर्ट नहीं करेगा। वहां तो मजाक बना दिया जाएगा, मजाक बना दिया जाएगा, उसके बाद आपको इनफेक्टिव माना जाएगा।
इसमें वो क्वालिटी नहीं है यार इस बंदे में, तो इस बंदी में तो ठीक है. So right now let us discuss what were your observations while doing the activity, what were your challenges that you faced, and how did you tackle those challenges. ठीक है, can we do that? Are you willing to do that? Comfortable हो इतना? Give me a thumbs up if you want to do this. अगर नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आप में से जो भी शेयर करना चाहता है अपना माइक ऑन करके आप शेयर कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि वीडियो ऑन हो, आप माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं. अगर माइक ऑन करने में कोई परेशानी आ रही है तो मेरे को बताओ. लेट्स डू दिस क्विकली बिकॉज वी आर लिमिटेड विद टाइम. ठीक है, हु वांट्स टू गो फर्स्ट?